The brand was promoted by Sonakshi Sinha. मैं बात करूं पहले ITS में जो नीचे कमर्शियल्स हुआ करते थे, ज़्यादातर उसमें जो ब्रांड्स आते थे वो हम सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के आते थे, लाइक मैकडी हो गया या इधर कैफेटेरिया टाइप हो गया। देन ITS में जो नीचे रिटेल थी उसके अंदर लीकर भी अलाउड हो गई अब। तो अब क्लब्स या रेस्टोरेंट बार वो भी आ गए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू इस प्रोजेक्ट में किसी को क्यों निवेश करना चाहिए एंड व्हाई एवरी इन्वेस्टर शुड गिव इट अ थॉट कि हाँ चलो इसको हम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट। व्हाई EON बेसिकली क्वेश्चन है। जिनको ऐसा लगता है तो उनको टावर दिखा देते हैं अपना। अच्छा तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। वैसे भी आज की डेट में मेरे क्लाइंट मेरे से इसलिए परेशान है क्योंकि टाइम से पहले डिमांड पहुंचा दी मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल यासी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। धन्यवाद। मुझे बिकॉज इस प्रोजेक्ट को हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ माय इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। छोटा सा एक हिस्सा है उनके इन्वेस्टमेंट, अभी तक उन्होंने जितनी की उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमने टावर ए ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, टावर ई का स्ट्रक्चर रेडी हो ही रहा है। तो मुझे आपसे ही जानना था कि जैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा है समझा रियल एस्टेट को, एक कॉर्पोरेट पार्क की सक्सेस ना बहुत हैवीली डिपेंड करती है कि उसके जो रिटेल, हिंदी में बोलें तो उनकी जो दुकानें हैं वो कितनी अच्छी लीज आउट होती हैं, कितनी अच्छी तरह से फंक्शन करती हैं। तो ये आप मुझे हमें हमारे ऑडियंस को, हमारे इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन कर पाएँ कि कैसे इस प्रोजेक्ट को आपने प्लान किया इन टर्म्स ऑफ रिटेल और कैसे आप इसे प्लान कर रहे हैं मेकिंग अ सक्सेसफुल रिटेल कमर्शियल फॉर पीपल। लेट्स से ब्रांड्स कैसे लाएंगे आप, क्योंकि सबसे दिमाग में क्वेश्चन है कि दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, क्या हमारे पास उतनी ब्रांड्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर मैं रिटेल या कमर्शियल की बात करूं तो कमर्शियल को चलने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। पहली चीज़ अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप जहाँ पर कमर्शियल बना रहे हो, इधर वो चाहे ITS के अंदर है या नॉर्मल एक कमर्शियल है, उसको चलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे आसपास की विसिनिटी में जो नीड है लोगों की या वहाँ पे जितना रेसिडेंशियल है उनकी ज़रूरत है उस कमर्शियल की या नहीं है, पहले पॉइंट। दूसरा, अब क्योंकि ITS प्रोजेक्ट्स होने लगे, उनमें अब नीचे कमर्शियल भी बनने लगा, तो अब कमर्शियल को दो टाइप से रन हो सकता है। पहला, एक तो वहाँ के लोग जो आसपास रहते हैं उनकी ज़रूरत, दूसरा जो ऊपर IT सेक्शन जितना भी ऑफिस स्पेस है उन लोगों की ज़रूरत। मैं बात करूँ पहले ITS में जो नीचे कमर्शियल्स हुआ करते थे, ज़्यादातर उसमें जो ब्रांड्स आते थे वो हम सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के आते थे, लाइक मैकडी हो गया या इधर कैफेटेरिया टाइप हो गया। देन ITS में जो नीचे रिटेल थी उसके अंदर लीकर भी अलाउड हो गई अब। तो अब क्लब्स या रेस्टोरेंट बार वो भी आ गए। लेकिन अब मैं बात करूँ अपने प्रोजेक्ट की कमर्शियल की, तो हम लोग बहुत कम आप देखोगे NCR के अंदर बहुत कम ITS प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर नीचे मार्केट है। मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ लाइक अब जैसे मॉल में होती है इस टाइप से। ज़्यादातर जो भी ITS नियर बाई हैं, एक्सप्रेसवे पे हम देख लेते हैं या अदर आप सेंट्रल नोएडा में आप देख लो, उनके अंदर नीचे से फाइन एंड डाइक के ब्रांड्स ही खुले हुए हैं, नीचे सच मार्केट नहीं है या एक दो ब्रांड्स आते हैं। हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं अपने यहाँ पर जो कमर्शियल बना रहे हैं वो इसी टाइप से डिज़ाइन है कि यहाँ पर आपको फूड कोर्ट का ऑप्शन भी मिलेगा जो कि आपको केटर करेगा IT सेक्शन को। यहाँ पर वो मार्केट भी मिलेगी जो कि आपके रेजिडेंशियल को केटर करेगी। तो हम दोनों टाइप से इसमें लेके चल रहे हैं कि दोनों लोग हमारे पास 50-50% का रेशो आए और हमारा जो कमर्शियल है वो रन हो इजीली। करेक्ट। और जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि क्या हमारे पास मोर देन इनफ पॉपुलेशन है उस प्रोजेक्ट को कैटर करने के लिए। फॉलो अप क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि IF नोएडा बाय फेयरफॉक्स इज़ वन प्रोजेक्ट, बगल में और भी प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट टू नेम एनी बट वो और भी प्रोजेक्ट्स हैं और आई एम श्योर इस पैच में 2-4 और प्रोजेक्ट्स आएंगे या नहीं। बट मेरा जो प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि डू वी हैव इनफ ब्रांड्स, मतलब हमारे पास इतने ब्रांड्स हैं कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली ऑपरेट हो पाएंगे फ्यूचर में। देखिए, ब्रांड से अगर रिलेटेड मैं बात करूं तो इनफ ब्रांड्स हैं, चाहे कितने भी कमर्शियल आ जाए।
देखिए पहली चीज़ तो यह है कि नोएडा के अंदर एक लिमिटेड ही कमर्शियल बन सकता है, क्योंकि अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि इस सेक्टर में इतना ही कमर्शियल होना चाहिए, ये आइदर ये रेजिडेंशियल सेक्टर है या कमर्शियल सेक्टर, तो एक लिमिटेड आपका कमर्शियल बने। दूसरी बात रही ब्रांडिंग की बात, तो ब्रांडिंग तो बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जो आसपास के हम लोग, अगर 140 की मैं बात करूँ तो आसपास नियर बाई जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो 137 ले लो आप या 143 ले लो, हम इसको बहुत पॉश इलाका नहीं बोलेंगे कि बहुत नीश इलाका है और मैं यहाँ पे लाके आपको कोई भी ऐसा ब्रांड खोल दूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं खोल दूँ गुची या वर्साचे, कोई भी ऐसे ब्रांड खोल दूँ जो कि लोग खरीदे ही ना, ठीक है, तो उसकी सेल डाउन जाएगी और वो एज आफ्टर सम टाइम वो कमर्शियल डाउन चला जाएगा। हमें ज़रूरत है कि हम जो आसपास की मार्केट है उसको समझें, उसको एनालिसिस करें कि यहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास सेक्टर में आते हैं या अपर मिडिल क्लास में आते हैं, उसी हिसाब से उसके अंदर ब्रांडिंग हो। तो हम वही सोच लेके चल रहे हैं कि नियर बाई अगर 4 लाख लोग आज के टाइम पे रह रहे हैं, सिर्फ मैं 5 किलोमीटर की विसिनिटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर। उन लोगों की ज़रूरतें क्या है, उन लोगों को चाहिए क्या, अभी की टाइम पे नीड क्या है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी बिल्ड करते हैं तो पूरा एनालिसिस होता है मार्केट का कि दूसरे फर्दर प्रोजेक्ट्स में क्या आ रहा है, हमें क्या नहीं रखना चाहिए अपने, या हम उसके अलावा क्या लेके आ सकते हैं जो कि। और सर देखिए क्या है ना कि एक जगह पर एक ही चीज़ हो ज़रूरी नहीं है कि वही चलेगी, ठीक है। दोनों चीज़ें अगर हम दो दो ब्रांड लेके आते हैं, अब आप देखते हो कि एक ही जगह पर आपका मैकडी भी खुला हुआ है, एक ही जगह पे आपका KFC भी खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि KFC की सेल डाउन हो जाएगी या मैकडी की सेल डाउन हो जाएगी, दोनों चलते हैं, क्योंकि दोनों का अपना अपना पैच है कि दोनों अपने अपने लोग लेके आते हैं, दोनों अपने अपने सेक्टर में महारत हासिल करेंगे। तो हम वो चीज़ें जो है सारी की सारी लेके चलते हैं कि इसको कैसे हम आगे घेटा करें। Perfect. Just a follow-up question and let me wrap this up. Like, do you think कि एक्सप्रेसवे पे जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या हैं, एंड अब तो सब में जो डेवलप हो रहे हैं होने वाले हैं, सब में दुकानें 110% रहेंगी, बिकॉज ITs में फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, जनरली डेवलपर इज कमिंग अप विथ रिटेल। तो आपको लगता है कि सारे की सारे प्रोजेक्ट्स आई एम श्योर कि सक्सेसफुल हो पाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं इसमें ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो शायद बिल्कुल भी अच्छा ना करें? कुछ होंगे जो एंड दे विल एक्सेल, जैसे आज एडवेंट इतना अच्छा करता है, एग्जाम्पल है। तो आप इसमें व्हाट इज़ योर ओपिनियन? तो देखिए मेरा ओपिनियन ये मेरा ओपिनियन ये कहता है कि 1% चांस या 2% चांस हम लोग लेके चलते हैं कि सारी चीज़ें रन नहीं होंगी। ज़रूरी नहीं है कि अभी नहीं होंगी, हो सकता है कि थोड़े समय बाद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो तरक्की है ना, कोई डिपेंड नहीं करता कि बहुत छोटी सी चीज़ का डेवलपमेंट आ रहा है, किसी भी एक एक्सप्रेसवे ही बनेगा, ये आगे तक जा रहा है। आपका जेवर एयरपोर्ट की वजह से मैं कहूँ तो ज़्यादातर डेवलपमेंट सिर्फ सिर्फ एक एयरपोर्ट पे डिपेंड करती है। उसी तरीके से हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे फर्दर जो IT सेक्शंस है जो कि गुड़गांव में आ जाए या दिल्ली के अंदर है, वो लोग यहाँ पर है। क्यों आए यहाँ पर? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, दूसरा अभी के टाइम पे रेंटल कम है, तीसरी चीज़ अगर इन्वेस्टर कॉल में हम, तो आज के टाइम पे जो कॉस्ट है, जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स के। हम आपके गुड़गांव में चले जाए या कहीं और चले जाए, NCR में किसी और पार्ट में चले जाए, यहाँ पर अभी का करेक्ट। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से आप उसको सेल कर रहे हो और किस टाइप से आप उसकी लीजिंग की तैयारी कर रहे हो। तो सारा का सारा ये विज़न लेके चलना पड़ता है। और ये बिल्कुल सही है कि 1-2% चांस रहता है कि एक चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। डिपेंड करता है कि ऑनर्स के ऊपर भी कि उन्होंने किस रेट में क्या प्रॉपर्टी खरीदी, उनका ROI परफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये इस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच यासिर फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। अच्छा लगा कि आपने एकदम ऑनेस्टली अपने इनसाइट्स को शेयर किया हमसे। थैंक यू सो मच। हाय शेरी, थैंक यू। वेलकम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और जैसे अभी यासिर ने हमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स बताए इस प्रोजेक्ट को क्यों कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, सक्सेस कैसे होगा, सारी अच्छाई बताई, बुराइयाँ बताई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू इस प्रोजेक्ट में किसी को क्यों निवेश करना चाहिए, एंड वाई एवरी इन्वेस्टर शुड गिव इट अ थॉट कि हाँ चलो इसको हम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। वाई EON बेसिकली क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं EON की बात करूँ, ठीक है, तो एक इन्वेस्टर या एक क्लाइंट यूँ भी होता है, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट का
और आसपास जो भी मेरे प्रोजेक्ट है उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ ये स्पीड में, ठीक है, तो अगर पहला आता है लोकेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकेशन, मेरा सेक्टर जो है 140 ये आता है, जिसका प्लॉट नंबर 1 ये है, ठीक है। तो उसका जो पॉइंट ऑफ लोकेशन है वो आपका 3 साइड ओपन कॉर्नर का प्लॉट आता है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया कि ईओन का जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम है अपने आप में, कि 3 साइड ओपन कॉर्नर का प्लॉट है। इसी के साथ साथ अगर मैं देखूँ जो मेरा पार्शल है डेट का, वो 13.65 एकड़ का पैच आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं देखूँ तो लगभग जो एमिनिटीज़ में अगर मैं देखूँ तो ओपन एरिया जो आसपास के अगर हम प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप मेरा लेआउट देखेंगे तो तकरीबन 70% ओपन एरिया छोड़ रखा है मैंने। 13.65 एकड़ के पैच में मैंने केवल 4 ही टावर बनाए और वो मेरे एन शेप में। अगर आप लेआउट देखेंगे तो तकरीबन 70% आपको ओपन एरिया मिल जाता है। साथ ही साथ क्या होता है ना कि जब एज ए इन्वेस्टर अगर मैं सबसे पहले अगर किसी को मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें तो आता है एक लोन का। अगर आसपास आप देखेंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट में बैंक की आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। अगर मेरे आप देखें तो 3 बैंक मेरे प्रोजेक्ट को बैंक फैसिलिटी आपका लोन दे रहे हैं, जैसे कि ICICI से आपको लोन हो जाता है, आपको एक्सिस बैंक से लोन हो जाता है, आपको HDFC से लोन हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एज ए क्लाइंट, एज ए इन्वेस्टर अगर मैं देखूँ कि इसमें एक श्योरिटी होती है, एक ट्रस्ट होता है कि पता नहीं बिल्डर कैसा है, क्योंकि आज की डेट में पिछला जो भी बैकग्राउंड रहा है तो वो थोड़ा सा रहा है कि मतलब अब यहाँ पर क्या है ना, आपको अगर बैंक इन्वॉल्व है तो मतलब जो मेरा ट्रस्ट बन जाता है कि एज ए इन्वेस्टर क्लाइंट मैं इतना पेपर वर्क चेक नहीं कर सकता जो बैंक ने बिल्डर का चेक कर रखा है। तो वो एक चीज़ आ जाती है कि आपको यहाँ पर लोन फैसिलिटीज मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो ITS प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनीज आएंगे, ऑफिस खुलेंगे, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। तो अगर आसपास के प्रोजेक्ट जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कहीं आपने विजिट की हो कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा आता है लिफ्ट का। तो यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ लिफ्ट 88 है मेरे इंटायर प्रोजेक्ट में। इस 4 टावर में 88 लिफ्ट मेरी आ रही है, मतलब 0 वेटिंग टाइम होगा ऑफिस पहुँचने का आपका। ओके। तो आपका साथ ही साथ अगर बात करूँ तो एश्योर रिटर्न, जैसे कि आज की डेट में चल रहा है मार्केट में, लोग अपना एक ट्रैप बना के कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं, जो कि आज की डेट में इन्वेस्टर को समझ में आएगा कि एश्योर रिटर्न क्या है। और अगर एश्योर रिटर्न अगर मैं दे रहा हूँ तो इसका मेरा वो आपको बताइए कि मैं इलीगल भी हो जाता है चीज़ें, एन भी लोग करना, बहुत सारी चीज़ों फिर बैड मोल नहीं हो पाता। करेक्ट। जस्ट अगेन अ फॉलो क्वेश्चन कि आपने USPs के बारे में बात की, आपने कहा कि नंबर ऑफ लिफ्ट एक रीज़न है, फिर उसके बाद लोकेशन है, 3 साइड ओपन आपका ये प्लॉट है जी। एट द सेम टाइम आई थिंक एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो शायद लोग डिस्कस नहीं करते कि सबसे बड़ी USP एक बिल्डर की ये होती है कि वो कितना तेज प्रॉपर्टी को बनाता है। हाँ, आप अपने कंस्ट्रक्शन, आपके प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा अगर बताएंगे कि कब शुरू हुआ और किस स्टेज पर है, और रेरा से कितना, मतलब रेरा की डेडलाइन से कितना आगे बढ़ चुका है या बहुत पीछे है अभी? अगर आप जैसे अगर मैं बात करूँ कर सकते हैं स्टार्ट की, तो जो मैंने स्टार्ट किया था March 22 में मैंने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था। हाँ, बेसिकली हमारा जो कंस्ट्रक्शन है इन हाउस कंस्ट्रक्शन है। ओके, ठीक है। तो आज की डेट में हम बैठे हैं March 2024, करेक्ट, ठीक है। तो एज पर रेरा जो मेरा टावर का पोजीशन था, टावर 1 ब्लॉक 1, वो December 25 था। बट आज की डेट में मेरा सुपर स्ट्रक्चर रेडी है, साथ ही साथ जो मेरा फिनिशिंग है वो भी ऑलमोस्ट 40-50% उसका हो चुका है। करेक्ट। तो टाइम से पहले उसको हम पोजीशन ऑफर कर रहे हैं साथ, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है मेरे लिए, टाइम से 1.5 साल पहले। करेक्ट। बट इसके साथ साथ और जो टावर्स हैं, जैसे टावर, हाँ, टावर नहीं हो गया मेरा 10th फ्लोर पे पहुंच चुका है, जिसका 15th फ्लोर ही जाना है केवल। तो वो नेक्स्ट ईयर हम मार्च में उसका पोजीशन ऑफर कर देंगे, जबकि रेरा के अकॉर्डिंग वो जो पोजीशन डेट है उसकी वो 26 है। और पूरे जो प्रोजेक्ट का मेरा डेट मिला रेरा का वो 27 है। तो 27 से पहले जो मेरी प्लानिंग है मैं इसको डिलीवर कर दूँ इतना 26 के लास्ट। इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन, इतनी अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन की स्पीड कंसिस्टेंटली मेंटेन करना, उसका ऐसा क्या रीज़न मानते हैं आप जिसकी वजह से ये मुमकिन हो रहा है या हो पाया? देखिए, सबसे पहले चीज़ है मेरा पेमेंट प्लान, ठीक है। आप बहुत सी जगह आपने देखा होगा पेमेंट टर्म्स जैसी जो होती हैं, शेड्यूल होते हैं कि 50-50, कि 50% आपने इनिशियली दे दिया, 50% आपका जाएगा सुपर स्ट्रक्चर पे या पोजीशन पे। तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो मतलब एक अमाउंट चाहिए होता है, कॉस्ट होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो मैंने पेमेंट प्लान अपना कुछ इस तरीके से रखा है कि क्लाइंट के लिए भी ईजी लगता है
और साथ ही साथ जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ेगी डिमांड की, वहाँ डिमांड आ जाती है। जैसे कि इनिशियली स्टेज पे 10% मेरा बुकिंग अमाउंट हो जाता है, ठीक है, 40% विद इन ए मंथ। उसके बाद मैं नेक्स्ट डिमांड करूँगा 10th फ्लोर पे, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी पैसे। उसके बाद फिर सुपर स्टिक पे आ जाएगा, फिर लास्ट फिट आउट पे आ जाएगा। तो ये क्लाइंट के लिए नहीं होगा, मेरे पास टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है। पर इसके साथ साथ थोड़े से कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको ये भी लगता है कि बहुत ही रिजिड और स्ट्रिक्ट पेमेंट प्लान है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शायद इन्वेस्ट ना भी करते नहीं। जिनको ऐसा लगता है तो उनको टावर दिखा देते हैं अपना, अच्छा। तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। वैसे भी आज की डेट में मेरे क्लाइंट मेरे से इसलिए परेशान है क्योंकि टाइम से पहले डिमांड पहुंचा दी मैंने, क्योंकि मैंने कोई भी ना उसमें ड्यूरेशन नहीं लिखी है कि 1 साल बाद पेमेंट आएगी, या मैंने सीधा सीधा मेंशन किया है कि 10th फ्लोर सुपर स्ट्रक्चर और आपका फिट आउट करें। तो अब जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर होगा वैसे वैसे डिमांड आ जाएगी। Perfect. Thank you, Sharif. Thank you so much. Lovely conversation. Thank you. Welcome, Harry, sir. First of all, thank you so much for joining us. I was waiting for this opportunity to get a hand on your at least 15 minutes. Pleasure is mine. Thank you, sir. Thank you. So the conversation will revolve around leasing in general, because most of the investors are afraid of the fact that okay, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारी इन्वेंट्रीज हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, बन रहे हैं, आ रहे हैं, बट उनका फ्यूचर क्या है? आर वी गोइंग टू हैव गुड ब्रांड्स इन दोज प्रॉपर्टीज? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, will the developer give enough returns to the investors? Because 4-5-6% MD में मिल रहा है, 7% MD में मिल रहा है. The developer is going to beat that, maybe not. So just these basic questions. And before that, I would also want you to just tell us a bit about your real estate journey as well, sir, before we address the question. Okay, let's take the third question first. As far as the journey is concerned, earlier I was a banker. Okay. Then I've been pushed into real estate. Pushed by someone? Yeah, exactly. By one and two of my colleagues, Okay. Who were working with the insurance earlier, and then they switched over to real estate. And the biggest attraction in the real estate is exactly the earnings and the money that is involved in it. So everybody got excited and tried to move towards that. So that was somewhere around 12 years back, 12 to 13 years back. And from that time I am in real estate. I have started my career in real estate when the real estate was at its rock bottom. Yes. That is 2011, 2012. So it was very difficult to sustain, and at times I have to think whether I have taken the right decision or not. But as the time flies by, I thought I made a right decision. You certainly have, sir, because we truly believe that people like you have spent 10, 12 years, good years, have definitely given a lot to youngsters as well, the ones who are joining. So, yes, so let's get back to the question, sir. So, do we have enough brands in the market? Okay, I'll just take another question that you have asked between. Is that the people are afraid of coming into commercial areas? Yeah, correct. Whether so many things are going to happen, what is being said and told to them by the builders. Exactly. This actually, Ravi, that when you are doing an investment, the basic of the investment is you have to give time to the investment. It doesn't mean that you invest something and you start expecting that my returns will be doubled or my principal amount is going to be doubled in an year or two. That's not going to happen anywhere in the world. Once in a blue moon you are going to get something, but as a rule it's not going to be. You have to give an ample time, either to the real estate, either to the financial market, either to the stock market also. You have to give time, and with time the returns will definitely come. They were saying, I was just going through some of the books in real estate. I don't remember the name of the author who has written, but he has written it very clearly that real estate or going to boom, the reason behind that is the God has stopped making land anymore. So whatever with the land that we had, we have this thing. And looking at the population increase, every inch down the line,
say 10 years, 15 years, if you are having a plot or you are having an inch of land in your name, you are going to be the king. Example that I can give you is, okay, most of the people out here in real estate right now, their forefathers, they have bought lands. And now they are earning good profit on those lands. You would see the big farmers out there in Punjab, the people with big land banks in Gujarat, Bombay. They're not a lot. You can name a few like Shapoorji, Palanji. They have a lot of land banks. They have bought lands. So these are people who are going to have a lot of money. So real estate is always, since beginning, is a very, very lucrative investment. Yeah. Okay. So now the second question that you asked in between, when we are talking about the commercial real estate specifically, commercial is on a point of 100, selling commercial real estate and then making or the construction of the real estate just add to the 30% of it. The rest 70% is how you are going to lease it out and how you are going, what are the brands or what are the things that you are coming out in your commercial is going to determine the future of that project as well as the future of the builder who is making it. Correct. For example, if I talk about a project very nearby, Advent, is one of the successful projects. Yeah, correct. That is there on Expressway. We have to accept it. And we have to look in the model on which they had worked. Why they are able to attract so many. Footfall is actually the basic thing. That will come into that. So leasing and branding is very important in the solution. Yeah. The follow-up question is, for example, the location of the Advent, let's say, is sector 142. 3-4 years ago, 5 years ago, 6 years ago, there weren't enough people living nearby, right? The population just escalated recently in the last 2-3 years, where people realize that having a home is a very important aspect of living a happy life. But they had very good brands at the beginning, from KFCs to Domino's to Subways, from very good banks like ICICI. They were already there. My question is, there weren't enough people, enough footfall, but still they had very good brands. Just to add to that, sir, the question is, how do you really attract brands? What is the basic of attracting a brand? What is the basic? The brands, simply every brand do its own research. I went to Bombay recently in one of the retail team, and I'm in touch with a brand called So Easy. That brand was promoted by Sonakshi Sinha. And when we interacted about they are coming out here in our project, they have shown me a data which I cannot believe on my eyes. They had a data of school-going girls, and they are planning is that down the line 2 years, these girls are going to be teenagers and they will be coming into the colleges. They will be requiring our beauty brands. So what they have done is that they have mapped the area around your project. They have the data that they come out is these are the children who are going to school. They are in 10th class. These number of students are coming up in 11th class. These are in 12th class. And to my surprise, they are planned in such a way we are going to have a store in that place, specifically in Noida, because the footfall and their consumers will be higher in that particular society. In years to come, In years to come, and then to this place, then to this place, then to this place. So brands are also working out here. If we talk about the expressway, the way the expressway is coming, it's tremendous. It is going to have the potential that people cannot even imagine. It's going to be more potential than Gurgaon, Cyber we talk about, because of the facilities that are provided by the authority.
We generally undermine the facilities that are provided by the authorities every time there and then. But if you look at the Gurgaon and the way the Noida Authority has built it up, it's very good. They have thought about down the line 5 years, if the traffic increases, how we are going to manage it, how the drainage is going to be managed. These are the very essential part of the real estate and the development of any town or the city or the place. Brilliant insights. Now when you say that we don't acknowledge the fact that authorities put in a lot of work making things easy for developers, one, and then making sure you are in right place, then only the brand will follow you. Exactly. Right. So it makes sense that the development has taken place in a way that we become a very attractive destination for brands. Right. Yes, exactly. Perfect. Now, just to follow it up, sir. For example, there is Starbucks in the next property to us, and then there is Barista in the next. Just to put it in as concise manner as possible, do we have enough brands in the market to cater enough inventories that we have in the market? Like, is there a mismatch for the timing which will get absorbed in some time, or you think there is no mismatch? The demand supply is absolutely fine. There's no mismatch. This demand and supply is going to be okay. Yeah. And actually, in Noida specifically, we have not seen so many brands. If I talk about, say, I'll take an example. If you mention about coffee. Yeah. When we talk about coffee, there are three things which come to our mind: Starbucks, Cafe Coffee Day, Yeah. Barista. Yeah. We forwarded Tim Hortons. Yeah. It's one of the brands. Donuts, Dunkin' Donuts, they have also their coffee brand. Yeah. They are coming up. There are so many brands that they are coming up, and when we are talking about the brand sensitivity of the people, when the people who are going for the brand, they go for that brand. I'll give you an example. A person who smokes Gold Flake cigarette. Yeah. If you offer him a Dunhill, he is not going to be happy, he is not going to be comfortable. He always take a Gold Flake. Yeah. And the same goes with the person who needs a Dunhill, so he needs a Dunhill. Correct. So people are so much brand conscious nowadays. If I like the coffee of Starbucks, so I go in a Starbucks. It doesn't matter whether it's X place or the wine place or Z place. Correct. You will go with that. Agreed. So you have to bring in the brands. That is not. We have enough brands. We have enough across the categories. Yes. So what is now talking about this project specifically, EON Fairfox? What is the leasing strategy, sir? The leasing strategy is we are first when the brands start coming in. When you are almost 70% of your construction, the brands start approaching you, and you start approaching the brand. But sir, then there are these brands who put the name of a brand saying we have signed an LOI before even just on the day of launch of a project. They put this tag that we have launched this, we have got this brand as they have signed the LOI. What is that? Can you name any of the project? Because I also want a project who has put in a board of some brand that they are coming up in our project. Down the line, I'm going to make the project after 7 years. Whether that brand is going to wait for that time, or in its actuality, how many brands are coming up in that particular project, they have put in the board on the entrance. No. It's almost nil. Yeah. So it's just you can say a marketing giving that I have an LOI. What LOI says? LOI says I have an intention to come to your project. But I do not promise you that Definitely, they are not going to promise anything. Correct. And that, obviously, if I'm going to plan an expansion, I'm talking about from the point of brand, a brand cannot predict down the line 7 years. They can predict down the line 1 year or 2 years. Yeah. This is the maximum. So once you are at 70% of the construction of the project, then you have at least 1 year time to hand it over to the brand. Correct. So the brand that
those are coming at that point of time are actually the real brand. So don't carry it away with the LOIs and anything. But just to simplify, you need to understand now. Just to simplify, what is LOI and what does it really have in the document? Everyone wants to know this stuff. LOI is actually a format. It's a letter of intent. It is a format which gives each and everything. The brand is coming in, the specifications of the brand has been given. And at the end of the day, the brand as well as the bidder, they sign. Generally now, when the LOIs are being signed, there is no bond which is being signed, which says that if you don't come to my premises, then what will I am going to charge? Or the brand will come to you if you are not able to provide me this thing within a particular time frame, then what I'm going to charge? What if an LOI is backed up with such a bond, then I consider it as a good LOI. Okay. 99.99% LOIs are not being signed with the bond. That's good. It's just 0.1% LOIs being signed. When you say bond, you mean the LOIs are not registered, right? LOI never registered at this time. Majorly they are not registered. Perfect. That's a very great explanation. So now we have ground floor, we have first floor, we have second floor in our project. It's more like a proper 3-floor mall actually. Obviously it's retail and it's open, but it's like a proper mall. Let's define what is the difference between a mall and a high street shops. Right. And there's one more word which used synonymously with these things are the condominiums. Yeah, correct. A mall is a box covered, and you have brand and the showrooms out there. Correct. When I'm talking about the high street, it's an open space and where you have different brands in shops or the restaurants. Okay. Condominiums are basically double-heighted shops, high street, a kind of a place where people walk in an open. Okay. They are basically not you don't find a boundary which is enclosing it. There is no enclosure as such. It's an open place. So this is the difference. Definitely doing these things. Yeah. Every mall has an expiry date. Okay. Or a shelf life. You can look at the examples. Yeah. There are plenty of examples in Delhi and that area. Actually, when somebody constructs a mall, when the technology changes, the mall, the services and the technology also changes in the mall. Since it's a constructed site, you cannot make so many changes in that. That's why the mall, they failed at point of time. Till the time they are on their peak, they attract VP. I'll give you an example of mall that is there at Khirgaon once for time, and this is Plaza. Okay. Down, say around 15-20 years back, on Saturday, Sundays, you don't find a place on that to park your car out there. There's so many things. But now if you go to the mall, I don't think that mall still exists because everything has gone to Saket, Right. the mall nearby. Right. So, generally malls, they have a shelf life, and you have a investor, a client, has to calculate that whether they want to stay back with their investment in it, or they have to move them out. They have to park their money somewhere in another one. This is how the investment works in. So just to wrap this up, sir, there are a lot of brands coming in, developers coming in with very unrealistic numbers, generating 12%, 14% ROI, rental yield I'm talking about, which pan India is 2%, 3%, commercial 5% to 6% maximum, is what I can think of. Maybe this is a very good market, Gurgaon is a very good market, we can generate up to 8%. What do you have to say about them? And secondly, what investors should really consider while investing in a commercial property?
While investing, let's just redivide it Yeah. into areas. The first thing is why to invest and where to invest. Where in real estate, location is very important. Very, very important. Where you are going to buy a commercial, whether that will be feasible down the line 2 years, 3 years. You have to look at the location. This is one of them. Then the reputation of the builder. Whether the builder is able to deliver it on time and the promises that has been said, that was there. Otherwise, so this is very important. As far as the figures that we are quoting, don't ever quote 12% or 3% post rental. In commercial, if I'm talking about, it is some rule that it will not going to go beyond 7 to 8%. If we are talking about the bank, if it's a private bank, then it will be 5%, and if it's a PSU bank, it will be 4%. You can put it simply this way, that higher the risk, higher the percentage of the return that you are going to get. PSU is always the safest investment that is available, PSU bank. That's why the rate of interest or the ROI is on the lower side. Correct. Okay. 12%, so definitely not. Initially, you have asked the question, why this thing, why not fixed deposit or anything else? देखिए फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू पुट इन द मनी इफ से आई एम गोइंग टू पे यू 7% ऑन एन ईयरली बेसिस योर प्रिंसिपल अमाउंट इज गोइंग टू बी द सेम 7% after taxation they will come say around 6%. So you get that money, but your principal is going to remain. But here what you are going to get is the principal is going to increase many folds. If you put it on 1 lakh rupees, you can expect a 5 lakh rupees down the line after 3 years or 4 years. So there's a huge difference. And if you go in with the rent, there is a 6% that you are going to get after it. It will work as a pension. So basically, one is appreciation, second is rental. If you combine two, you can definitely make 13-14% very easy. Exactly. Yes. Okay. All right, sir. Thank you very much. Thank you very much. Pleasure.